क्वेश्चन है तो बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज रेज योर हैंड। Now theorem 5.2.1, if A is an n cross n matrix that it's again a square matrix, you know, number of rows and columns यहाँ पे same, the following statements are equivalent, means कि अगर एक true होता है तो दूसरा भी true होगा, दूसरा होगा तो first one भी true होगा। So A is an n cross n matrix, the following statements are equivalent। क्या equivalent है? A is diagonalizable। अब अभी हमने देखा definition 2 में, what does it mean A is diagonalizable? It means that there exists some invertible matrix P such that P inverse AP is a diagonal. अभी हमने देखा by the definition 2. And in this case we will say that P diagonalize A. ठीक है? This is by definition 2. और इसी में definition 1 भी use हुई थी, जहाँ पे इसने similar का word use किया। And B part, A has n linearly independent eigenvectors. ठीक है, A has n means कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ रोज हैं तो 2 की बात हो रहा है, 2 आइगन वेक्टर्स। अगर 3 by 3 का तो 3 की बात कर रहा है। A has n linearly independent eigenvectors, और eigenvectors कैसे आएंगे? You know, first we need to find the eigenvalues by the characteristic equation. In the last lecture you people learned determinant क्या था वो, lambda I minus A is equal to 0। इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन को, और हम क्या फाइंड करेंगे आप लोग? आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपने क्या फाइंड करना? आइगन वेक्टर्स। इन द लास्ट लेक्चर यू विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द इक्वेशन लैम्डा I माइनस A into x is equal to 0। ये इक्वेशन आपने यूज की थी। सो if we have a square matrix then the following two statements are equivalent। इसमें दोनों equivalent conditions में क्या है? The first one, the matrix A is diagonalizable। diagonalizable की definition अब आपके mind में definition 2 से आपके mind में हो, or it is diagonalizable, it means that there is exists some invertible matrix P such that P inverse AP is equal to a diagonal matrix। और second जो इसी के इक्विवेलेंट कंडीशन है, A has n linearly independent eigenvectors। okay, वो जो आइगन वेक्टर्स आपके पास आएंगे दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, and you know how to find linearly independent, जो by the definition we have n vectors v1 and so on up to vn vectors। इसको अगर हमने linearly independent चेक करना है, there exist some scalars k1 v1 and so on kn vn is equal to 0। this will be hold only when k1 k2 and all the coefficient is equal to 0। तो linearly independent इस तरह से हम इसको शो करें। dear students, any question about this theorem? the definition जो आपने भी दो definitions को देखा, या theorem है इससे related, और इसमें देख लें हम आइगन वेक्टर्स को भी यूज कर रहे हैं। प्रीवियस linearly independent you people already learned about all of these things, और diagonalizable की जो definition है और किस तरह से हम फाइंड करेंगे, in the next example you will see after one more theorem। जी dear students, any question? कुछ पूछना चाहते हैं? अब्दुल्ला वहाब और अब्दुल्ला मंसूर, अहमद नबीन, अहमद इफ्तार, मोहम्मद मौजम अली। जी बेटा। राबिया सालुद्दीन, सजाद अली। एनी क्वेश्चन? चलें जी, हसन रजा राबिया सालुद्दीन reply to me, no question, okay, we can continue। okay dear student, after this now you will see one more theorem। इसका प्रूफ से मैं किया हुआ है, ठीक है, you can see by yourself। I just want to explain, maybe we need to use these results when we will solve our problems। now we have theorem 5.2.2, this theorem, and there are two results in this theorem। if
lambda 1 and so on up to lambda k are distinct eigenvalues of a matrix A. हमारे पास क्या है, lambda 1, lambda 2 and so on up to lambda k are distinct eigenvalues of a matrix A. You know how to find, पीछे अभी मैंने बताया भी था, characteristic equation से हम find out करते हैं these eigenvalues. And if v1, v2 and so on vk are corresponding eigenvectors, meaning कि lambda 1 से corresponding v1 आता है, इससे v2 आ जाएगा and so on, इसके corresponding vk कोई eigenvector आएगा, और वो कैसे find करते हैं, इसकी characteristic equation use करते हैं इसके लिए, lambda I minus a is equal to 0, ठीक है, और यहाँ पे determinant भी था साथ, और ये eigenvectors find करने हैं corresponding to these eigenvalues, उसके लिए जो फार्मूला था lambda I minus a into x is equal to 0. So it is given in A part that we have if k distinct eigen values of a matrix and v1 and so on vk are corresponding eigenvectors, then this set of vector is linearly independent set. Means कि आपके पास ये जो set बन रहा है corresponding to eigen values, ये क्या होगा, linearly independent. No need to check, ये इसने prove किया हुआ है. This is first result, और ये equivalent results नहीं है.